A very good afternoon to all. So, welcome back to our another panel, Emerging Trends in Art. So, just give me a minute so that I can adjust the slide. So, I hope the slide is visible properly. Yeah. So, welcome back to our next session, Emerging Trends to Arts. So, I am Ekta Gupta, founder of Parijay Genus and Mool Srishti Foundation. So our vision is to environment and women employment, bringing the people close to the nature and reusing the waste materials and creating a platform for the innovative ideas. So our mission is that every corner needs a plant. So I would like to introduce our first panelist, Aisha Mir. She is an aviation student, space enthusiast. Aisha is a nature lover and has brought up and schooled in Medina, Saudi Arabia. Her mission in life is to make sustainability practices and high quality, environmentally friendly products and services accessible to all the convenient to be proudly incorporated into our daily lives. Aisha wears many hats. She is the world's first artist to transform discarded and expired cosmetics into unique art assets in the form of paintings through her initiative, Arti Antific. He co-authored case study about the same has won the highly commendable case study award at 27 Siman 2021 and is published in prestigious Emerald Emerging Market Case Studies Journal UK. She is also a National Geographic certified educator and has a keen interest in networking with the ecopreneurs and environmentalists across the world. Currently, she is studying. Sorry, I have to readjust the screen. She is a student at Emirates Aviation University, Dubai, and aspires to become an aerospace engineer. Wow, Asha, that's really wonderful. We will come back to you. Now, our next panelist is Mrs. Sadhna Sangar. She is principal at Government College, Dera Bassi, Punjab. Born in December 1960 at Hoshiarpur, Punjab, she pursued her master in philosophy and fine arts from PU Chandigarh, former joint director, DPI Chandigarh, former secretary, Punjab Lalit Kala Academy, Chandigarh, former principal, Government College, Mohali, and founder president, We, a group of Indian contemporary women artists. She has a lot of awards and honors in her pocket. She received Lifetime Achievement Award for distinguished contribution to the field of art in Chandigarh Kala Academy 2023, Chandigarh Lalit Kala Academy and Tourism Chandigarh 2008, Nari Shakti Award 2020 awarded by Asman Foundation Chandigarh, Dainik Bhaskar Woman of the Year 2012, Neeraj Bhanot Award by Punjab Arts Council, Chandigarh Pride Award, Art and Culture, honored by Dainik Bhaskar, 7th May 2014. So we can see a lot of appreciations, honors, and awards through these pictures for Sadhna ji. So our very renowned, eminent artist, Professor Saroj Rani, she will be our next panelist. She taught art history in government colleges and Punjabi University, Patiala, where she established the Department of Fine Arts and Director of Museum and Art Gallery. She wrote numerous books on Indian art and aesthetics published by the university and organized national and international seminars on Indian art and crafts. She got senior fellowship of Ministry of Culture on the cultural aspects of wall paintings of Punjab. She was a project director of MOOC program of UGC. One of the book on Punjabi artists he published by the Punjab Lalit Kala Academy, Chandigarh. There are a lot to introduce about our eminent speakers on this eve, but with the short of time, we are able to give a brief introduction to them. So definitely later on, we will be organizing the individual sessions for all. So to continue this legacy of art and discussing the what are the emerging trends in the further in this current scenario, as per that as the world is changing, so everything is changing. So let's start with the session.
So Aisha, I would like to start with you. Though we can see your artworks on the screen. So very first thing is A for Aisha, A for aviation, and A for art. So it's a cube, and how you feel that this triple A is working for you, and what is your inspiration? As in your resume, you are using the not the conventional paints, brushes, and all. You are using the discarded and expired cosmetics for your artwork. So how you got the inspiration and how you connect your education and your inspiration and your work. Yeah, over to you, Aisha. Okay, so good afternoon, everyone. Peace, mercy, and blessings of God be upon you all. Thank you so much for inviting me here today. And yeah, and the beautiful relationship all the three domains have. It's really interesting because for me, science and art are not two different things. It's like they complement each other. So for me, like nature is a perfect example of how the complex uh, formulae and the theories and the whole scientific thing is integrated in a very artistic format. If we just take an example of a tree, we have a lot of scientific processes going on, photosynthesis, so many processes are going on. Just look at, we just pick up a leaf, okay? Forget about the whole tree, just a leaf. A lot of processes are going on in there, but that hardcore science is perfectly integrated in a very artistic format. The beautiful green color, the veins of the leaves, how the leaves are, connected together on the branch, and the whole thing looks aesthetically beautiful. So art and science are not two different things. It's complementary. It's interconnected. So that's exactly what worked for me. Being an aviation student, aspiring to become an aerospace engineer, inshallah, in the future. So for me, space, art, then environment conservation, I'm kind of trying to bridge the gap between all of these. And of course, entrepreneurship, because there is a big gap between art and entrepreneurship, a gap between art and environment conservation. There is also a gap between art and science, which we need to bridge. So I'm trying in my best capacity. Being a student, of course, as you said, it's sometimes difficult to manage a lot of different aspects of life together. But in my best capacity, I'm trying to make sure that I try my best to save, even if I'm able to save one fish from dying out of cosmetic pollution, all that effort put to create the paintings are worth it. Thank you, Asha. Can you please share your story that how you got inspired to do this noble work and connecting this your environmental initiative to art? So it all started when I was in school. मैं जब स्कूल में थी तब बहुत जिज्ञासु थी हर चीज के बारे में पूछना, ये कैसे होता है, ये क्या होता है, ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हर चीज की वर्क लाइफ साइकिल सीखने का बड़ा शौक था। सिमिलरली ऑब्जर्व करती थी लोगों को, एंड हमारे आसपास जितनी भी लड़कियां होती, टीचर्स, फ्रेंड्स, हम लोग बहुत मेकअप यूज करते हैं। मेरे पास खुद के पास बहुत मेकअप है। तो one day it was not like one day I decided that मुझे ये करना है। It was like a phase when I was observing people and questioning every waste has a story. कॉस्मेटिक्स का क्या होता है? हम जब नेल पॉलिश हमारी एक्सपायर हो जाती है, लिपस्टिक का कलर आउट ऑफ फैशन हो जाता है। मे बी देयर इज आई शैडो पैलेट जो मेरे ड्रॉअर में रखा है, मैंने एक दो साल रहा, मैं भूल गई एंड देन मुझे अचानक से मिला, आई कांट यूज इट एनीमोर, उसका क्या होगा? And this is everyone's story. हर घर की कहानी है, क्योंकि हर घर में फीमेल्स होती है जो कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक्स यूज जरूर करती है। एंड वो वेस्ट कहाँ जाता है? वो अगर बिन में जाता है उसका क्या होता है? एंड हमारे घर में से शायद कुछ कॉस्मेटिक्स निकले, लेकिन स्टोर्स में से बल्क में निकलता है। What they do with it. So
इन सब का जवाब मुझे गूगल नहीं दे पा रहा था। हर स्टूडेंट का यही होता है, कुछ भी पूछना है, straight away go to Google. But Google was also not able to help me because all the articles out there were talking about plastic pollution, about the package, जो makeup bottles की packaging होती है, recycling and all those aspects, but not about the color. उस बॉटल के अंदर जो मेकअप मटेरियल है उसका क्या होता है, no one talked about it. So I thought कि इसका कुछ करना है, and then I thought after multiple experiments I thought I need to do something unique. So I tried solving an environmental issue in an artistic way. So that's how I came up with these paintings. And एक भी एक painting को बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, and the process is completely different from one painting to another because the medium is not the same. You know, in oil painting में आपके पास सारे colors आपके oil painting के ही है, oil based है. Acrylic में सारे acrylic है, watercolor and so far and so forth. Cosmetics में ऐसा नहीं होता है. You have pencils, eyeliner pencils होती हैं. You have liquid like nail polishes. You have greasy material like as the lipsticks. Then you have powder based in maybe palettes. You know, you have foundations, you have creams, mascara, kajal. Each and everything, anything you name cosmetics, yeah, as a makeup product, मैं use करती हूँ, recycle करने में. So हर painting के लिए क्या genre है, उस color requirement क्या है, मेरे पास available stock की कौन सी category है. So it's a long process, you know, collection, segregation, and then we create the painting. And then it takes days and days to create one piece of art. But all that effort is worth it. Because जब लोग देखते हैं, they realize that eco-friendly art can be extremely beautiful while still being eco-friendly and not compromising at all with the, you know, protecting the environment. एक नया चेहरा निकल के आता है eco-friendly art का. मतलब मैंने बहुत लोगों को exhibitions में आते हुए देखा है, या even social media पे जब मेरा काम देखते हैं, by Allah's blessings, they always see like, wait, what? This is cosmetics? Waste cosmetics? मतलब we have never thought कि cosmetics से इतना इस तरह का art बन सकता है. And I hope all of you like my work. And if you do, please support it. कोई भी artist आपको या कोई भी entrepreneur, ecopreneur, मैं उसको ecopreneur का नाम देती हूँ. कोई भी अगर आपको मैं अपनी audience से request करूँगी, कोई भी अगर आपको ecopreneur मिलता है, please support them because they are really working hard to make this world a better place. हमारे planet को वो revive करने की कोशिश कर रहे हैं. So I think it's we are doing our job of doing what we are doing. Now it's your job to support them in whichever way possible. Thanks, Asha. It's a wonderful insight. So can you please share your challenges when you started this work and how you overcome these challenges? Yeah, sure. So one of the biggest challenges when I started creating these paintings was the fact that you can't use recycled cosmetics. The first step itself was a challenge. What to do with the expired cosmetics? You can recycle paper to make paper. You can recycle plastic to make plastic. But you can't recycle cosmetics and then market it as a recycled cosmetics. No one is going to use it. So the first thing was that we need to do something unconventional with this waste. That's a lot of waste that is being generated. We need a practical solution for that. And then after a lot of experimenting, this process or the whole thing came out. Now, even while creating these paintings, till now I'm learning. I will not say like I'm totally done with the process. I'm still learning. I explore new techniques of creating these paintings because you know, cosmetics, the world of cosmetics is always you know, evolving. नए products आते हैं and new stuff is coming up, and then I need to make different kind of artworks. So the first thing, the process was a challenge. Second thing, convincing people and educating them about cosmetic pollution, because मैंने survey किया था among individuals, and also like when I go to boutique supervisors and I talk to them, makeup store supervisors and stuff.
they did not realize that cosmetic pollution might be such a big problem. And even people like individuals, they did not realize about the threat it poses to the environment and how uh, how much destruction it causes to the beautiful planet, because it has like more than 160 chemicals that it's seeped into the underground water, and it pollutes that, it pollutes the water bodies, it pollutes the underground, the beneficial bacteria in the soil. Then the underground water is there, so it's like a whole multi-layered destruction. It's not just water pollution, air pollution, soil pollution, it's all together. And it's not like restricted to a certain geography or a certain period of time. It's continuous. It's If the underground water is polluted, it makes its way to a river or canal that will take all the chemicals back to the ocean, and the ocean will give you back acid rain and fish that might have consumed such harmful chemicals from the cosmetics in its lifetime. So it's like a cycle, and we need to break that chain. That's where my work comes in, where I stop it from going to the bin. That's the once it goes to the bin, I can't do anything after that, because now then it's mixed with different types of waste and there's a lot of biochemical reactions happening in the landfill. अब मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन bin तक जाने से पहले मेरा काम है लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना कि प्लीज अगर आपके पास एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स है, प्लीज आप उसको फेंकिए मत. We'll figure out a way कि मैं उसको जो है कलेक्ट कर सकूं. Right now I'm in Dubai. मेरे खुद के पास अभी एक पैकेट रखा है, मेरी फ्रेंड ने मुझे जो है दिया था. मैं कुछ अरसे के लिए इंडिया में थी, and she got to know that I'm in India, so she made sure that she comes to my home, and I was a bit busy, we had some commitments and everything, so she came to my place and delivered that packet of expired cosmetics. So I'm really concerned. जिन लोगों तक मैसेज पहुंच चुका है, they are concerned and they're trying to be a part of it in whichever way possible. Thank you, Asha. From the now onwards, we will also definitely care about, think about it, that how these cosmetics can be reused, or how we can connect with you to know the ways, or anyway, if there will be any means to send these cosmetics to you for the reusability. So it will be wonderful to collaborate, and we as a team of Sadhna ji and Saroj ji, they are so experienced, and they have a team of, they are connected with all over artists in India. So how this platform can be extended so that this work can be useful to all, and a lot of people who care for the environment and are conscious, how they can contribute to this mission. Thank you, Asha. So let's move to our, we will come back to you for the Q&A. So now we will move on to Sadhna ji. Sadhna ji, as we were discussing that when we talk about the waste and the artwork and these things, so as we have a rock garden in Chandigarh, so these, whenever there is an artwork, we see a lot of dumping people dump their artifacts and all, something they use for something, and after they don't know how to dispose of or how to conserve, because art takes, as Asha said, that art takes a lot of creativity, and it is close to the artist's heart whenever they create an art piece. So how these art pieces needs to be conserved, and what is the need of it, and how there should be some policy and a proper team of advisors, and the who can guide the for the implementation phase. Yeah, over to you, Sadhna ji. नमस्कार सभी को. मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि को नेक चंद जी के पास जाने का मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका मिला. बार उनके पास गए जब हम स्टूडेंट थे, उसके बाद जॉब मिली, फिर जॉब के दौरान भी बहुत मौका मिला उनसे काम करने का. तो उनके जो रॉक गार्डन की प्रोग्रेस मैंने देखी है, वो छोटी चीजों से उन्होंने कलेक्ट करने के बाद जब उन्होंने धीरे उसको शुरू किया, पहला फेज बनाया, तो उसकी मेंटेनेंस तक नहीं थी.
तो वो कर रहे थे काम, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो मैंने एक दिन उनसे सवाल पूछा था कि सर आप तो काम कर रहे हैं, आप नेक्स्ट फेज भी बनाने की सोच रहे हैं, तो कैसे होगा इसकी मेंटेनेंस के बारे में। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो कर दिया, और आगे जो आने वाली जनरेशन है वो उसको संभाले। तो आने वाली जनरेशन में हम भी आते हैं, तो हमने धीरे-धीरे जैसे ही रॉक गार्डन की प्रोग्रेस देखी, ऐसे ही सिटी में और जगह भी प्रोग्रेस देखी है। ये तो चंडीगढ़ है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन्ड है अब तो। जैसे हम रॉक गार्डन की ही बात करें, उसके अलावा 36 में भी एक डीएसओआई के सामने भी किसी ने एक पाइप से और जो कपबोर्ड होते हैं, उनसे वाटर टैंक्स होते हैं, उनसे भी बना रखा है। लेकिन वहाँ पर इतनी मेंटेनेंस नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पर जो रॉक गार्डन की बात हम कर रहे हैं, तो रॉक गार्डन में जितने आर्टिफैक्ट्स में उन्होंने जो मटेरियल डाले, जैसे चूड़ियाँ थी, ढक्कन है, बॉटल्स हैं और मटके हैं, और छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बना के एक बहुत बड़ा विलेज भी बनाया हुआ है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें आगे आने पड़ेगा एनजीओज़ को, जैसे कि एक अमेरिका ने एनजीओ ने उसको मेंटेनेंस संभाली हुई है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको संभाल रही है। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे शहरों में जो अंडर ब्रिज बने हैं और जो फ्लाईओवर्स बने हैं, उनके नीचे भी बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन कुछ समय के बाद वो सारा काम खत्म हो जाता है, या उसके ऊपर बहुत डस्ट है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो तो है ऐसा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है शहरों में। जैसे मैंने लुधियाना में देखा कि लुधियाना में बड़े खूबसूरत तरीके से वॉल को पेंट किया गया, और वहाँ पर कुछ ऐसे ही कुछ क्रिएशंस भी की गई, लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि वहाँ पर वो सारी खराब थी। तो इसके लिए हम अपने आप को ही ज़िम्मेवार समझते हैं कि हम लोग जब बना देते हैं कलाकार, तो हम भी कभी इनसे कोई ऐसा अपने कंडीशन नहीं रखते कि जब हम करते हैं इस आर्ट को, तो उसके लिए हमें एक इनसे कमिटमेंट भी लेनी चाहिए कि इसको मेंटेन रखें। एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें इस ग्रांट से हमें काम करने के लिए प्रोजेक्ट देती है, तो प्रोजेक्ट का एक मतलब बनना चाहिए एक पेपर कि जिसके ऊपर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो, और हम उस आर्ट वर्क को बचा के रख सकें। तो हमारी खुद की ज़िम्मेवारी भी है, और मैं ये चाहती हूँ, जैसे मैं अपना काम खुद भी मैंने बहुत सारे ऐसे जो वेस्ट मटेरियल के ऊपर किया, केटल्स पेंट की पुरानी, और रिकॉर्ड्स पेंट किए मैंने, पुरानी साड़ीज़ को यूज़ किया, और बहुत सारे मैंने ऐसे काम भी किए हैं। और फिर वुडन फ्लोर मेरा निकला, तो वुडन फ्लोर की जो वुड थी, वो ऑलमोस्ट आधी-आधी खराब, फिर मैंने कटिंग करके उसको निकाला। तो वो मैंने उसको उसके ऊपर पेंटिंग की। तो उसको मैंने एज़ आर्ट मटेरियल यूज़ किया। तो उसके ऊपर जैसे आयशा ने तो कॉस्मेटिक को यूज़ किया है, हम प्रॉपर कलर से करते हैं। तो उसकी मेंटेनेंस भी रहती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे स्प्रे आते हैं मेंटेन करने के लिए। तो हमें एक तो ये है कि हमारे पास प्रॉपर मटेरियल्स होने चाहिए जब हम बनाएँ, तो उसके ऊपर जितना हम काम करते हैं, उसको इस तरीके से हम आर्ट वर्क को बनाएँ कि उसके अंदर डस्ट ना जा सके, और उसके ऊपर कभी कोई ऐसा ना हो कि फंगस लग जाए, क्योंकि ओपन में कई बार हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं। जैसे हम शहरों को सजाने के लिए बना रहे हैं, मैंने बताया कि अंडरपास और वो जो है फ्लाईओवर्स के नीचे जितने भी हैं, वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ चलती, इतनी धूल होती है। हम कुछ इस तरीके से मटेरियल को उसके ऊपर यूज़ करें कि वो जो है हमारा आर्ट इफेक्ट जो है वो मेंटेन रह सके। तो बाकी बात रही जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। कुछ एनजीओज़ को भी आगे आना चाहिए कि हम उसको ओन कर लें। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, और उनको कहें कि हम इसको मतलब महीने में 2 बार आके उसको क्लीन करके जाएँ।
तो इस तरह से जो आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, उनकी सबसे बड़ी यही बात रहती है कि उसकी मेंटेनेंस ना होने के कारण वो बहुत जल्दी आर्टिफैक्ट्स डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम तो वेस्ट मटेरियल से जब शुरू करते हैं, इसी तरह से मैंने एक जगह काम किया था। हमारे पास फ्रिज था, गीजर थे, उसको हमने गार्डन के लिए कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स बनाए, लेकिन उसके नीचे हमने प्लेटफ़ॉर्म बनाया, ताकि फ्रिज एक लोहे की चीज़ है या कोई भी मटेरियल हो उसका, तो वो वेदर के साथ खराब होगा। लेकिन उसके ऊपर हमने रेज़न आर्ट से काम किया। तो रेज़न आर्ट के ऊपर थोड़ा वेदर का इफ़ेक्ट कम होता है, तो वो काफ़ी लंबा समय चल सकता है। तो इस तरह से गार्डन्स में मैं आश्रम में अपने इस तरीके का काम कर रही हूँ कि वहाँ पर जितना वेस्ट मटीरियल डंप करके रख देते हैं, तो उसको या फिर हमारी इंडस्ट्री का वेस्ट भी होता है, स्क्रैप होता है, उनसे भी वो भी ऐसे ही फेंकते हैं। तो वैसे तो उनको जो स्क्रैप हमारा इंडस्ट्री से आता है बहुत जल्दी जंक लग जाता है। तो उसके ऊपर भी हमें मेंटेन करने के लिए कुछ पेंट ऐसे हम यूज़ करें, कुछ वार्निश वगैरह ऐसी यूज़ करें, बहुत सारे मटेरियल आजकल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से जब हम करेंगे, तो हम उसको मेंटेन कर सकेंगे। तो लेकिन मेजर रोल रह जाता है, आर्टिस्ट तो बना देता है। तो आर्टिस्ट तो फिर आगे बढ़ जाता है और काम करने के लिए उसके पास और प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन पीछे एक ड्यूटी ज़रूर होनी चाहिए। या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, या वो एनजीओज़ की ड्यूटी है, या हम सभी जो लोग हैं, उनकी भी ड्यूटी है कि हम उनको जा के मेंटेन करें और उसकी मेंटेन करेंगे तो हमारी जो खूबसूरती है, वो तो बढ़ेगी ही, लेकिन हमारे अपने मन को भी एक सुकून मिलेगा कि हमने कोई अच्छा कार्य किया। एक आर्टिस्ट बना के चला गया, लेकिन हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। जब भी वहाँ से गुज़रेंगे, आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है उस पीस ऑफ आर्ट से कि हाँ, ये मैंने इसको किया। जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ जैसे-जैसे ग्रो करता है, तो हमें मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो इसी तरह से अगर हम किसी एक जैसे ही आर्टिस्ट करके गया है काम, एडमिनिस्ट्रेशन की भी ड्यूटी है कि बार-बार उसकी मेंटेनेंस के लिए उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएँ और हमारी खुद की ड्यूटी भी है जब भी हम किसी गार्डन में जाएँ, या तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताएँ कि ये यहाँ पर ये डैमेज हो रहा है, इसकी मेंटेनेंस की जाए। ये भी एक ड्यूटी बनती है। दूसरा जो मैंने कहा है कि पेड़ को जैसे पालते हुए हमें सुकून मिलता है, तो हमें ये आर्ट इफ़ेक्ट को देखते हुए, करते हुए काफ़ी सुकून मिलेगा। जी। थैंक यू साधना जी। आपने बहुत ही अच्छी बात की कि सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट रहता है तो उसके अंदर यूजुअली यूजुअली हमने देखा है कि मेंटेनेंस बजट जो है वो नहीं होता है। सो हुँ, इट शुड बी एट द पॉलिसी लेवल कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट रहे तो उसके ऊपर एक मेंटेनेंस बजट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हुँ, अभी तक आर्ट प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे नॉट ओनली चंडीगढ़, हर जगह पे जो कॉर्पोरेशन है उसमें वेस्ट टू वंडर पार्क्स की बात हो रही है। सो हुँ, क्या उन वेस्ट टू वंडर पार्क्स में बिकॉज़ चंडीगढ़ तो है वो ऑलरेडी श्री नेकचंद जी ने इतना अच्छा काम किया है, ही इज़ द इंस्पिरेशन टू ऑल। तो आपको क्या लगता है कि अगर वेस्ट टू वंडर पार्क्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, तो उसमें हम एज़ अ कॉमन पीपल एंड आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो क्या रोल प्ले कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करने में, वहाँ पे अच्छे आर्टवर्क्स क्रिएट करने में एंड हाउ इट कैन मोटिवेट द पीपल फॉर दिस वेस्ट रिडक्शन? क्योंकि देखिए वेस्ट उतना जितना प्रोड्यूस हो रहा है, उतना रीयूज़ तो डेफिनिटली नहीं हो सकता है। हुँ। सो किस तरह से कुछ ऐसे वेस्ट टू वंडर पार्क्स में इस तरह क्या काम किया जा सकता है जो इंस्पायर करे वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी? क्योंकि सिर्फ रीयूज करते रहेंगे और लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कितना भी वेस्ट करो, रीयूज तो हो ही रहा है। इसको करने के लिए हमारी जो नैतिक ज़िम्मेवारी यही बनती है कि हम हमारे पास जिनके पास गार्डन्स हैं, वो अपने घरों में कुछ चीज़ें बना सकते हैं। उसमें जैसे हमारे बड़े-बड़े बॉटल्स आते हैं, उनमें हम प्लांट्स लगा के हैंग कर सकते हैं। छोटा गार्डन है या हमारी टेरेस है,
तो उसको डेकोरेट करेंगे। जब हम ये चीजें सारी वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं फेंकेंगे, तो हम उसका रीयूज करके घर पे ही उसको एक अच्छा नया रूप दे के उसमें मिट्टी वगैरह भर के तो प्लांट्स लगा देंगे। आजकल तो बहुत कुछ हो भी रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में सब्जियां भी उगानी शुरू कर दी है, जो बहुत बड़े पॉट हैं, उसमें मिट्टी वगैरह डाल के उसको डेकोरेट किया हुआ है। तो उसको पेंट कर सकते हैं, पेंट करके और खूबसूरत तरीके से दीवार के ऊपर हैंग कर सकते हैं। हम अपने ग्रिल के ऊपर हैंग कर सकते हैं। हमारी अगर छोटी सी गार्डन है, उसमें भी रख सकते हैं। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है, अगर हम घर में ही यूज करें, तो मेरे को लगता है कि हम बाहर वो नहीं जाएगा ज्यादा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरी बात रही बाहर जो होटल्स वगैरह हैं या बड़ी कोई इंडस्ट्री है, तो अब आजकल तो ये हो गया है कि वहां पर जो भी इंडस्ट्री के पास वेस्ट मटेरियल है, उसको रीयूज करने के लिए सीधा पहुंचाया जाता है एक गोदाम में। यहाँ पर वो आगे जाके वो रिसाइकल कर ले, या तो रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल नहीं होता है तो कुछ लोग, आर्टिस्ट लोग, हम लोग ही वहां पर, मैं कई बार कबाड़ में जाके वहां से सामान चूज करती हूँ कि ये हमें मिल जाए तो हम इसकी अच्छी एक आर्ट इफेक्ट बना देंगे। जैसे कि हमारे अभी इलेक्ट्रिक चीजें हैं बहुत सारी, वेस्ट हो जाती, तो उसको हम ऐसे ही स्क्रैप में गिरा देते थे। तो वो हम घर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में हैं, तो वो इंस्टीट्यूट में भिजवा दें। अपने घर से अगर घर का छोटा एरिया है, तो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, वहां पर हम गाइड कर सकते हैं। उनकी गार्डन्स हैं, उनको सजाने में बहुत काम आ सकता है। बाकी जो हम बड़े पार्क बना सकते हैं, उसमें तो लगा ही सकते हैं। पहले हम छोटे लेवल से जब शुरू करेंगे, तो वेस्ट ये बाहर जाएगा नहीं। मेरे को लगता है कि जी एक इंस्टीट्यूट है, जैसे कॉलेज में मैं थी, तो कॉलेज में भी मैंने बड़े प्रोजेक्ट ऐसे किए थे कि टायरों से हमने बहुत सारी कुछ चीजें बनाई। टायरों के बीच में हमने प्लांट्स लगाए गोल करके, फिर उनके मूड़े बनाए, बैठने के लिए सीटिंग एरिया बनाया उसका। मतलब इस तरीके से वेस्ट चीजों को हमें संस्थाओं में देना चाहिए। यहाँ पर गार्डन्स डेवलप्ड हैं, उनको और अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल से अगर हम ऐसे करेंगे, अपने घर से शुरू करके बड़े प्रोजेक्ट की तरफ तो तभी जा सकेंगे कि छोटे छोटे जब हम करेंगे, तो वेस्ट मटेरियल ज्यादा घर से बाहर या इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को कहना पड़ेगा कि वहां पर जो गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन अपने नए नए प्रयास कर रही है गार्डन्स को डेवलप करने के लिए, उसमें भी हमें उनकी सहायता, आर्टिस्ट को स्पेशली सहायता करनी चाहिए। वहां जाके उनको उनको प्रोजेक्ट बना के देने चाहिए, उनको डिजाइन बना के देने चाहिए, कलाकारों की टीम बनानी चाहिए। जैसे बहुत सारी एनजीओज कर भी रही हैं। तो हमें खुशी होती है जब इस तरह के इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोग्राम होते हैं, तो उसको उसमें हम अपना योगदान दे सके, तो उससे बड़ी खुशी नहीं होती है। जैसे जैसे आप उसके साथ जुड़ते हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको अपना जीवन सार्थक लगने लग जाता है कि हमने कुछ और किया, इससे ज्यादा और कुछ किया। तो इस तरीके से करते करते हम बहुत एक बड़ा जो हमारा मतलब ये स्क्रैप है, इसको यूज में ला सकते हैं। Thank you. जी थैंक यू साधना जी। आपने हमें हमारे स्कूल डेज और कॉलेज स्कूल डेज याद करवा दिए हैं, जहाँ पर हम लोग अपने बुजुर्गों से, अपनी दादी माँ से, नानी से एंड मदर से देखते थे कि किस तरह से वो घरों में हर चीज को बेस्ट यूटिलाइज करते थे। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो घर के कपड़े हैं, स्वेटर्स हैं, या कोई भी मटेरियल है, उसको वो कभी भी बेकार में फेंकते नहीं थे, उसको रीयूज करते थे। बट राइट नाउ वी आर इनटू द थ्योरी ऑफ यूज एंड थ्रो। सो कैसे इसको हम मटेरियल्स को रीयूज करें कि जब तक हम लोग बेस्ट उसको यूटिलाइजेशन पे नहीं लेकर आते हैं, तब तक जो है वो हम लोग कॉन्शियस नहीं है। सो डेफिनेटली वी हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दिस connecting the art and how art can be useful to motivate and inspire the people for reusability. Yes. So now, thank you, Sadhna ji. Now we will come to Saroj ji. So सरोज जी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया कि किस तरह से आयशा जो है वो काम कर रही हैं वेस्ट कॉस्मेटिक्स पर, एंड व्हेन जो ये आर्टिफैक्ट्स बनते हैं वो कंजर्वेशन पर आते हैं,
तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो आर्ट वर्क है, इट्स अ soulful way of expressing. So how the commercialization of everything, and now it's a commercialization of art also, because handworks की demand कम है ना, तो जो digitalize हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये commercialization का क्या impact आ रहा है आर्ट पर और आर्टिसंस पर? देखिए, एकदम पहले बता दूं कि मैं आई एम नॉट अ प्रैक्टिकल, नो आई एम नॉट, आई एम आर्ट हिस्टोरियन and I love aesthetics. I teach aesthetics. That's why I'm, you know. First is yeah. देखिए, if we go back to the old times, we can see that what was the purpose of art behind. Okay. And now the time has changed. The test of time, so many change has actually, of course, it will be there, you know, with the passage of time. Art has a different earlier, but now it has different because there was no word of utility and state in the early art. But now, if and utility is not there, then we think that this art is just for nothing, you know. But now skill that matters, utility that matters. There's so many, I mean, trends in art, like, you know, there's so many genres, expression and cubism and pop art particularly. I've seen, you know, that is the best example which Sadhana gave, that of the rock garden. I too met Lake Chand so many times. Actually, that's not just a performance. The soul was living there, you know. That is a place where we can go and tell to the students or to the, I mean, to the persons who want to know, whether desire to know, yes, this was our culture, you know. Look at how he collected the Bengals, how he made that, I mean, collected those worship objects, particularly worship, you know, made in clay. There's so many other things also. In the, I mean, the early period, those are the really lessons with the waste material. That was not waste, that was most valuable material which he did, you know. The combination he made of the Bengal red and green, and, you know, that is symbolic in our culture. You know, those are the symbols of, I mean, when that is marriage and the girl she wears, then see that the bell is there, that also a part of our culture, you know. But she did, that's marvelous. There is no, I'm happy, you know, to tell you that one thing. Okay, only one artist, which I've seen in USA, in America, only Lake Chand was there in the museum, no one else, you know. Oh, look at his wonderful, I mean, work. People still remember that only one work by that artist, and no Indian artist was there at all. So now I'm coming to the, I mean, how this waste material, not only waste material, rather valuable material, we can say, you know, that work in our culture, in our art, you know. In front of my house, I'm giving the examples from my own life. I have a house here in Patiala. There's a park in front. I'm showing you those visuals. There is one artist, you know. Artist is you know, person from the theater. Yeah, theater. He's teaching in the school. So he always called his students in the afternoon and to do get the material from all the houses. जो किसी के घर में फालतू पड़ा है, even he came to my house, ले जाओ. तो पूरा जो हमारा that's known as in Patiala urban state, he collected the material and made so many beautiful things, you know. That the why here is one place that is making, you know, that beating the you know, thali, or that you know, that was thrown in the
in the dust, but he did it, he's just beating it. Then see that the tree, that the place where it is marvelous, What he did, he got the papers and he did it. So he made so many, trees from there, the meaningful trees, not just, just a name, not like that, He gave the same colors to the paper, to the bottles, to so many plastic things. Then he collected one charkha also, the charkha, that's a spinning wheel. He placed in such a way as if by painting a women figure behind the charkha, as if that the old Dadi is just spinning or sitting on the wheel. How we can say that that is a waste of material? That is not a waste of material. It depends on your mind, how you take it. Even so many chairs he placed that how those they belong to which dynasty earlier, that the British, they were sitting on that chair that is like this. He painted so many, just with one brush, he did it, marvelous, So I think it was very difficult to throw the material outside the house, where to put it, how to put it. But he collected from all the houses and gave birth to this park. As people, they come, they sit. Even so many, films, small films from the university, they are made there in that park. So it depends how you, what type of aesthetics you have. But if you know that technique, then your aesthetic sense will work on that. This is composite relationship of both these. The way he made that, door, that is ceremonial with the broken pieces, small pieces. Even the leaders he painted. Okay, what type of leader, political leader is there? What he did, he just with one brush he did it, and in front of that he placed some tables according to the psyche of that. He dissected that psychology of that person. That's very interesting. If you really see now the people, they come and celebrate. Their functions. It's just a matter of 5-6 months he developed. Even we had there in the department around, we have some of the sculptures they are made by the waste material. The students, they did it. Emerging trends in art. That is, all are there. For example, the moon. Made it moon like this from that stained glass. Otherwise that was thrown in the. So this is not a waste. Rather, this is actually the technology of your mind and your aesthetic sense is combination of that. I had a question from Asha that how she relates these two things, that the aviation and that the painting and his own culture, that in the horse, I was just watching that she has some Arabian expression in that. How she did, it's marvelous. It's not so easy to do it. It depends how she thinks. Otherwise, it's not so easy to join these two. On one side, aviation, science, and another side is creative activity. It's a marvelous combination in her personality. And she's so young, इतनी जवान लड़की है, उसको कैसे उसने सारा ये इकट्ठा किया, कैसे ये इसको समझ आई, उसका अंदर का सारा उसी में है सारा कुछ. That is a real text. वो तो बहुत ही जो कहते हैं दुर्लभ टेक्स्ट है उसके मन में, तो she can go ahead. I congratulate her. I was thinking कि कैसे एक साइंस का स्टूडेंट है, एविएशन का स्टूडेंट है, वो इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है और उसकी कंटेंट जो है वो इतनी रिच है कि उसकी तो भाषा भी, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो हॉर्स है, उसका जो वो पीछे दीवार बनी हुई है, the way she has painted. Thank you so much. I really appreciate that. You really made my day. You deserve it. You deserve it. Really, I was just watching your paintings. I know Sadhana very well. She also a wonderful artist, But the way you combine these two things, science and art, aesthetics, and your own language into that flow, that the color you use, that the material you use, I have not
Really congratulated. You deserve. Thank you so much. Thank you so much. I mean, very much impressed by your work, you know, that the way you had, I mean, narrated and you are doing that work from my side, because you are just a young girl. Blessings, lots of blessings from my side. You do it, carry on with this. Thank you, inshallah. Thank you so much. So this is not, I mean, this is not a trend. Now the people there, I mean, that the people, they are free. Artists, they are free. They can do anything. They can choose anything, you know. They can work, not like that earlier. Okay, you're bound to Impressionism. Now you are bound to Expressionism. This is the pop art and this is the street art. Now you're doing it. No question. Now freely you can do it. This is the Azadi, you know. And this is the time when you can do such wonderful works. You know. Thank you very much. I have very few words to say, and nothing more than this. Thank you so much, Saroj ma'am. So it's really wonderful to host you here at this panel discussion, and thanks a lot for your time. So any questions from anybody, Dilip ji? So Aisha, I have seen your raised hands. So you would like to add something? Yeah, I was totally agreeing with Sadhana ji when she said, you know, she was mentioning about recycling things to make projects in schools and colleges. तो मैंने भी बहुत किया है, तो मुझे वो बस स्कूल लाइफ की याद आ गई, इस वजह से I became a bit excited, क्योंकि स्कूल में I think if we encourage this practice कि आप you know जरूरी नहीं आपको स्कूल अगर साइंस फेयर है स्कूल में और आपको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, आप कोई बहुत ही हाई फाई नो खरीद कर चीज लाकर आप फिर प्रोजेक्ट बनाओ. आई थिंक अगर साइंटिफिकली करेक्ट भी होगा, आई डोंट थिंक वो सस्टेनेबल होगा. एंड हम क्या करते हैं, चीजें लाते हैं, कट करके पूरा बनाते हैं, देन उसका जो शेविंग्स कटिंग्स बचता है वो हम फेंक देते हैं. सो एंड प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बेयरली कोई भी स्टूडेंट उस साइंस प्रोजेक्ट को अपने घर में सजा के रखता होगा. So my whole concept of you know coming up with this painting was something कि जो durable हो, जो आप सालों साल यूज कर सको एंड वो खूबसूरत लगे आपके घर में. अगर मैं कोई DIY चीज कर रही हूँ, आई एम मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ पेन होल्डर और यू नो दोस प्लास्टिक बैग से जो फ्लावर्स बनाते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, ये बहुत खूबसूरत एक्टिविटीज है. बट माय होल कंसर्न इज वी डू इट इन अ वे व्हिच इज ड्यूरेबल एंड जो लॉन्ग लास्टिंग हो. हम बस इसको यू नो एक एक्टिविटी की तरह हमने कटिंग किया, हमने बनाया एंड वो 3 दिन के बाद मुझे वो बिन में नहीं मिलना चाहिए. रिसाइकलिंग शुड बी डन इन अ वे व्हिच डज नॉट लुक लाइक इट वाज वेस्ट इन सम पॉइंट ऑफ इट यू नो इन इट्स लाइफ टाइम. वो किसी जमाने में वेस्ट हो गई लगना नहीं चाहिए. अगर वो है भी रिसाइकल चीज, सो इट शुड बी सो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल, रिलायबल, आप जो भी उसको एडजेक्टिव दे दो, कि वो आप उसको यूज करते जाइए, उसकी जो वैल्यू है वो खत्म नहीं होनी चाहिए. हम DIY प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक वैल्यूएबल चीज को खरीद कर लाके हम बनाते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू खत्म कर देते हैं. आई थिंक वो माइंडसेट जरूरी है बच्चों में बचपन से डालना कि आप जो चीज यूज करो उसकी वैल्यू इंटैक्ट रहनी चाहिए, बल्कि आप उसमें वैल्यू ऐड कीजिए, उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसको खत्म ना कीजिए. I will add something more into it. There is you know, वहाँ पे म्यूजियम है लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में. There are the folk motifs on the walls, and inside there are so many, I mean, objects of various materials and all that. हमारे एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है, he lives in Switzerland, देव, नाम आपने सुना होगा. So he is a great writer, a great artist, you know, known in the world. She did it, but now उसमें कुछ नहीं है. She is right कि ठीक उसको होना चाहिए मटेरियल को, then only, but preservation is not so easy. Preserve करना भी चाहिए साथ साथ में. अब उसका कोई, there is no sign at all of those things. Everything has gone to the store. This is there. It's really sad to know about it. कि उसका नाम है, बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन वो तो है ही नहीं उसमें. वहां पे there is no museum at all. म्यूजियम है लेकिन things are not there. सब खत्म हो गए.
ये तो साधना जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भी प्रिजर्व करने के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, देन ओनली you can move towards this side, otherwise you will not. Yes, absolutely right. So थैंक यू Aisha, you वेरी मच। मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जब से हमने बचपन देखा है, तो हमने अपने साथ साथ, जैसे नानी दादी के नुस्खे की बात करें जैसे, तो उनको भी हमने अपने जो कपड़ों से या और कई चीजों को वो अपने हाथ से बनाते थे, पुरानी चीजों को वो रिसाइकल करते थे। तो आजकल भी बहुत कुछ गाँव में तो होता है। तो जिस तरह से अभी हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो उसके जो बीच में से बहुत सारी आजकल सुंदर-सुंदर एम्ब्रॉयडरी होती है। तो उस तरीके से जो घर पे बैठी हुई लेडीज हैं, जैसे घर से हम उसको फेंक देते हैं बाहर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसको वेस्ट मटेरियल में बिन में डाल दिया और या फिर काम वालियों को दे दिया। तो ये एक एनजीओ के काम होने चाहिए कि वहां पर जो अभी भी गांव में कुछ ऐसे लोग काम करना चाहते हैं मिलके, तो उनके लिए एनजीओज हम बनाएं और उनसे काम कराएं। और उनके जो वर्क बनेगा, जैसे बैग्स बनते हैं और बहुत सारी चीजें पुराने कपड़ों से बनती हैं। तो वो जो कपड़े हम ऐसे बाहर फेंक देते हैं, उससे बेटर चीजें बन सकती हैं। उस स्क्रैप से बहुत सारे हमारी नानी दादियां बिछौने बनाती थी, है ना? वो वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं, वो कपड़े बाहर नहीं फेंकती थी कभी भी। तो हम लोग उन पे सोते थे, जो छोटे बच्चों के लिए बनाते थे। तो अब उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके ऊपर बहुत बढ़िया सा कवर या उसी कोई, जैसे आपने गुजरात में देखा होगा, गुजरात में बहुत सारे जो हमारे क्राफ्टमैन हैं, वो छोटे-छोटे पीसेस को जोड़ के एक बहुत सुंदर सी हमें बेडशीट बना देते हैं। या इस तरह से हमें यहाँ पर, जहाँ पर ये नहीं हो रहा, उन जगहों पर कुछ एनजीओज़ को काम करना चाहिए, फीमेल को, मेल को लेके, जो उनको सिखा सके और उससे जो बढ़िया वेस्ट मटेरियल भी हमारा संभल जाएगा और एक अच्छे आर्टिफैक्ट, और उसके अलावा कि मेरे को लगता है कि ये सोर्स ऑफ इनकम भी उनके लिए होगा। तो ये मैं कहना चाहती थी, और वेस्ट मटेरियल के ऊपर काफ़ी काम किया जा सकता है। थैंक यू। आवाज़ नहीं आ रही बेटे जी। या थैंक यू साधना जी। सो आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी हमारी डिस्कशन जो है वो एक नया रूप लेगी, एंड होपफुली बहुत जल्द हम सब लोग इकट्ठे मिलके कुछ ना कुछ इस पर कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग दादी नानी, इंस्पिरेशन फॉर परिजय इज ऑल्सो सेम, क्योंकि दादी और नानी जो हमारे बुजुर्ग थे घर में, उनसे हमने जो रीयूजेबिलिटी सीखी, तो उसी रीयूज स्लोली स्लोली हम लोग भी दुनिया की उसी भीड़ में गुम हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी मेच्योरिटी आई, तो रियलाइज किया कि किस तरह से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब सोचते हुए जो सीरियसली द ट्रू इंस्पिरेशन, आज जब ये डिस्कशन हो रही थी हमारे एंसेस्टर्स की एंड रीयूजेबिलिटी की, सो दिस इज द ट्रू इंस्पिरेशन बिहाइंड द परिजय एज वेल एज सपोर्टिंग द वुमेन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज देयर आर 49% वोटर, फीमेल वोटर्स इन इंडिया। लेकिन और उन 49% में इतना हुनर है, इतना आर्ट है, और घर बैठे ही लेडीज इतना काम कर सकती हैं, एंड किस तरह से उनके उस काम को, उनके इस टैलेंट को यूटिलाइज किया जा सके, घर बैठी वो काम कर पाए और इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए। यही जो है परिचय के प्लेटफॉर्म को बनाने का एक विजन था। तो एंड इसी पे करते करते जैसे साधना जी ने तो लास्ट टाइम इस बार के नवोत्थान में शी वाज द चीफ गेस्ट। सो नवोत्थान हम लोग 2018 से एक साल में एक बार इवेंट करते हैं, और उसमें यही एक कॉन्सेप्ट है। हम रखते हैं कॉम्पिटिशन, फ्री हैंड ब्रशलेस पेंटिंग कॉम्पिटिशन एंड क्रिएट फ्रॉम वेस्ट। सो उसका मोटिव यही है कि आर्ट जो है, आर्ट पे कोई बंदिशें नहीं है, एवरीथिंग इज इन माइंड। एज आप सबने भी कहा कि एवरीथिंग इज इन माइंड, नथिंग इज एक्चुअली द वेस्ट। तो पहले हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्शन में कि किस तरह से किचन वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द बायोएंजाइम एंड कंपोस्टिंग,
ठीक है, किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। एंड नाउ थ्रू आर्ट वी आर डिस्कसिंग कि किस तरह से जो हमारे घर का वेस्ट मटेरियल है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, आर्ट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोग अपने जीरो वेस्ट। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग द art as well as in the eco-friendly way. So we have to just think that everything is in mind if there is a thought. कहते हैं कि यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज के यूनिवर्स में अगर कोई थॉट आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं सकता है। थॉट तभी आती है अगर वो पूरी हो सकती है, जरूरत है तो हमें उसके लिए मीन्स को ढूंढने की। So it's really very nice to connect with the like-minded people. So anybody from the audience, if they would like to ask any questions, so please type in the chat box, or you can unmute yourself and ask the question. Yes, please, anybody? Anybody would like to ask any question? So Sadhna ji, Aisha ji, and Saroj ji, if you would like to add something, कोई message आप as a concluding remark अगर आप कुछ share करना चाहते हैं, then please. हाँ, अगर ये हम सबको समझ आ जाए, we can change the world. देखिए समझ नहीं आता, this is the problem with us. जैसे ढेर लगे हुए हैं इधर भी हमारे 39 सेक्टर की ओर, परहैप्स इतने बड़े ढेर कूड़े के नहीं हो, शायद ना हो। वो चीजों को अगर ढंग से जब करें, जैसे अब ये जो है 2-2 डस्टबिन रखते हैं, इट्स वेरी यूजफुल। अदरवाइज देखा जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है यहाँ पे, कौन सा ये गांव है इसमें कि कैसे उसको कूड़े को उठाया जाए। सारा कूड़ा तो नहीं होता, उसमें बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो काम की होती हैं। जी जी, सो थोड़ा सा सोचने की समझने की जरूरत है। एंड बहुत ही इजी वेज के साथ हम इस जो वेस्ट हमारे घर से जाता है उसको हम एक वंडर वेल्थ की तरह क्रिएट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द कॉर्पोरेशंस टू क्रिएट द वेस्ट टू वंडर पार्क्स एंड आल्सो दीज RRR सेंटर्स एंड RMC सेंटर्स, जहाँ पर इतने लोग मिलके इतने एंथुसियाज्म के साथ काम कर रहे हैं ताकि इस वेस्ट सेग्रीगेशन पर और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर जो है वो काम किया जा सके। सो थैंक यू सो मच